हस्तिनापुर जो है वो पूज्य वरुण जी महाराज की जो है प्रेरणा से जो हुआ, स्थापित जो हुआ। इसी तरह से जो है उन्होंने बुंदेलखंड में जो है एक प्रकार से शिक्षा जगत में जो कार्य किया है वो बहुत महीने जो है मैं संक्षिप्त जो है समय में इसी तरह से जो है जैन साहित्य का इतिहास दो भाग जो है मैं अभय कुमार जी ने जो है ये काम जो है किया। उनका जब हमने निमंत्रण कार्ड जो है देखा तो उसमें लिखा कि राष्ट्र के जो है 75 वर्ष स्वतंत्रता संग्राम के जो हुए, तो स्वतंत्रता संग्राम के जो उपलक्ष्य में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे प्रोफेसर गुलजार चंद जी भूरावाला का स्मृति ग्रंथ प्रकाशित हुआ। और इसी तरह से इतिहास के क्षेत्र में हमने जो है कार्य किया, संस्थान ने जो है काम किया। संस्थान ने 2 जो है वॉल्यूम जो है प्रकाशित किए। जैन साहित्य की इतिहास पंडित सिद्धांताचार्य पंडित कैलाश जी ने 3 भागों में प्रकाशित किया था। तो पूर्व पीठिका तो जो है उनका जो है हमारे पास उपलब्ध था, लेकिन 2 भाग उपलब्ध नहीं हुए थे। तो जैन साहित्य की इतिहास प्रथम भाग में उन्होंने कर्म सिद्धांत से संबंधित जो षटखंडागम की जो परंपरा जो है उससे लेकर के वर्तमान में जो है जो कर्म सिद्धांत पर जो ग्रंथ लिखे गए उसका जो है पूरा का पूरा जो है प्रथम भाग में जो है परिचय जो है दिया है। तो आचार्य पुष्पदंत भूतबली से लेकर के जो वर्तमान की जो परंपरा है उसमें ऐतिहासिक दृष्टि से कर्म का किस रूप में विकास जो हुआ उसका प्रथम भाग में विवेचन किया गया। द्वितीय भाग में जो जैन साहित्य के जो 4 अनुयोग हैं, प्रथमान युग, कर्णान युग, चरणान युग और द्रव्यान युग, उसमें द्रव्यान युग अध्यात्म विषय और तत्वार्थ विषय, तत्वार्थ सूत्र ऐसा है जो जैन दर्शन का आद्य सूत्र ग्रंथ है और जिस पर मैं समझता हूँ 25 से अधिक जो है टीका जो है ग्रंथ लिखे आचार्य पूज्यपाद आचार्य तत्वार्थ स्वार्थिक आचार्य अकलंक देव। इसी तरह से अनेक टीकाकारों ने जो है टीकाएं में लिख करके जो लिखा उनका पूरा का पूरा इतिहास जो है पंडित जी ने द्वितीय भाग में जो है दिया है। जब मैंने उस ग्रंथ को जो है पढ़ा, आद्यंत जो है पढ़ने का, क्योंकि प्रूफ रीडिंग का कार्य जो है मुझे संस्थान के सहयोग मंत्री आदरणीय अशोक जी ने सौंपा। जब अक्षरशः जो है पढ़ना पड़ा तो मुझे उसमें जब पंडित जी ने जो श्रम साधना जो है कार्य जो किया है, अगर समाज उसका हीरो से भी जो है मूल्यांकन करती तो भी जो है कम था। इस तरह का उन्होंने अहरनिश जो है कार्य किया है। ऐसे जो है विद्वत्ता की जो है साक्षात प्रतिमूर्ति और हम सब की साथ महाविद्यालय के प्राण आदरणीय जो है पंडित कैलाश चंद जी को इस अवसर पर मैं नमन करता हूं। और इस कड़ी में जो है जैसे 3 ग्रंथों का जो है मैंने परिचय दिया, 2 ग्रंथ और जो है प्रकाशित जो संस्थान ने जो है किए। जैसा कि बताया था संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जैन दर्शन के पूर्व विभागाध्यक्ष आदरणीय पंडित अमृतलाल जी ने जो आचार्य वीर नंदी का जो चंदा प्रभु चरितम जो है उस चंदा प्रभु चरितम में जो तत्व संसिद्धि की जो व्याख्या है उस पर ढूंढारी भाषा में जो वचनिका है जयचंद जी की, उन पर जो है बहुत बड़ा जो है कार्य किया। और उसके प्रकाशन करता पंडित जी के ही परिवार के जो है नाती मैं उनको स्मरण करना चाहता हूँ जो सामने हमारे विराजमान है, श्री प्रकाश जी, चंद्र प्रकाश जी और सूर्य प्रकाश जी। इन सब ने जो है पुण्यार्जन करके उस तत्व संसिद्धि ग्रंथ के प्रकाशन में अपना योगदान दिया है। और जो 5वीं जो कृति जो है अनेकांत और स्यादवाद, जैन दर्शन का जो है प्राण जो है अनेकांत जो है माना जाता है। और उस वस्तु स्वरूप को प्रतिपादन करने का जो सिद्धांत है वो स्यादवाद जो है, क्योंकि ये कहा गया स्यादवाद सर्वथैकांते त्यागात कमृत चतनिधि सप्तभंग नयापेक्षा हिया दे विशेष का। दर्शन के जो तलस्पर्शी विद्वान प्रोफेसर उदयचंद जी हुए जो दर्शन विभाग के एकमात्र जो है जब भेदभाव नहीं हुआ था, सिर्फ दर्शन विभाग ही चलता था, उसके भी अध्यक्ष रहे। और उनको सारे के सारे जो है धर्म दर्शन के ग्रंथों पर उनका असाधारण अधिकार था। जिस पंक्ति को आप जो है चाहें उस पंक्ति का जो है वो अर्थ जो है बताने वाला यदि बनारस में विद्वान था वो प्रोफेसर उदयचंद जी जो थे। तो मैं उनका ये ग्रंथ जो है हमारे संस्थान के शोधाधिकारी श्री मनीष जी के जो पिताजी निर्मल चंद जी की स्मृति में इसका प्रकाशन जो है किया गया। मैं इन सब के प्रति जिनका भी सहयोग रहा उनके प्रति तो आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने धर्मपत्नी श्रीमती क्रांति जैन के सहयोग के लिए भूल नहीं सकता और अपनी बेटियों को नहीं भूल सकता। जब हमने 1200 जो मतलब जो पृष्ठों का जो है मतलब एक प्रकार से जो परिमार्जन करने के लिए प्रूफ रीडिंग की, तो इन तीनों का जो है बहुत बड़ा जो है संबल रहा। तो मैं आदरणीय अशोक जी के प्रति और संस्थान की कार्यकारिणी समिति के प्रति हमारा आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस सारस्वत अनुष्ठान में मुझे अपनी आहुति देने का अवसर जो है प्रदान किया। मैं ये जो 5 ग्रंथों का अभी लोकार्पण जो होगा, 5 और 6 जो हो गए और 7वां ग्रंथ जो है अभी और उसके बारे में जो है आपके सुन करके फिर यहाँ विमोचन का कार्य हुआ। सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। In a short while, we are going to release
Pragya's book In the Womb of the Goddess, which is a collection of poetry. To speak a few words about that, I would like to invite Ms. Soumya Iyer. Please come on the stage and speak about Pragya's book. We can clap for her as well, please. J.J. Nendra. I hope it's okay if I speak in English. So, Pragya Bhatt is a consummate writer. From short blurbs on social media designed to draw the attention of modern time-crunched youth, to her blog that follows her at home and abroad, to publications such as her books, including, she has a book out from a few years ago, Beyond Asanas, and also the book that is launching today, In the Womb of the Goddess, and you'll see it all, you'll all see it in a few moments. She writes across the board, so you'll find that she has work from the academic sphere to literary, nonfiction, and now poetry. So I have known Pragya for just over 2 years now, and most of that time, as you're all aware, has been through COVID. So most of the time I've only known her online, and then in the last 1 year we've been able to meet. And what I've found is that she not only writes herself, she inspires and motivates others to write and express themselves through the written word. The other passion that Pragya has is research. So everything she studies as a perfect yogini, following Swadhyaya and Dharana, an introspection into how each of her thoughts, words, and actions, man, vak, karn, is an introspection into how it impacts her and the world and the universe around her. This book, In the Womb of the Goddess, is a combination of Pragya's research and writing. Pragya researches how little acts have transformed her and the people whom she interacts with. In each poem, there is a story of an individual or several individuals going about their daily lives, trying to make their existence meaningful. From her housekeeper asking for support in small ways, to her old Spanish teacher who was unable to instill another language into her heart, her best friend's buoyancy with stones. Pragya describes the details of a singular story surrounding these lives. She denotes her own connections and understanding of their lives through these anecdotes in her poetry. Throughout the book, there's a sense of the feminine aspect that runs within the poems, whether it is overt or innate. I'd like to offer a reading of one of the poems, one of the poems, and it is actually the 11th poem in the book, and it is titled In the Womb of the Goddess. Decades ago, on an overcast, windy day, I stood on a makeshift ferry on the Brahmaputra, that lone male river valiantly snaking through ancient land of female rivers and Shakti peaks. It is said that if you cross the Brahmaputra once, you cross it another 6 times, my friend told me. Her words battled the furious wind to reach my ears, and from there burrowed into my heart. Later, I made my way deep into the womb of the goddess, who bled for 3 days every month, her devotees and their wishes in abeyance for the ritual readiness of her womb. I floated in the damp, still air, lightly getting closer and closer to the source. I will cross the rivers 6 times over,
to come here and be birthed whole.